Hello everyone, and welcome to the Hindu editorial analysis presented to you by Vaishnavi Pandey. And I welcome you all. I hope everyone has joined. Good afternoon, Afroz. I hope everyone is doing well and you watched the previous one. Hello Rohit. The previous Hindu editorial analysis. I hope everyone has watched it. तो 9th मार्च था तो हमारे पास कंटेंट बहुत ही कम था बट दिस टाइम वी हैव गॉट अ ह्यूज एडिटोरियल दैट वी हैव टू डिस्कस सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू join fast so that we can get on with it. आज बहुत ही लंबा एडिटोरियल है and we have a lot of vocabulary words. We have a lot of them, so very important in that case, because if you know a lot of words, high frequency words अगर बहुत ज़्यादा use हुए हैं, and the editorial is also something which is a combination of skimming and skipping. तो आप कुछ कुछ चीजें हम ध्यान से देखेंगे, कुछ कुछ चीजें हम skip कर देंगे या skim कर देंगे. uh, okay, I am so glad that you are attending it regularly. Okay, Shraddha is also here. Hi Abhishek. Abhay, hello, good afternoon, everyone. I hope everyone is doing. I know Adarsh is not Adarsh, it is Prachi. I know. I've got it last time. Okay, Palak is as Palak this time. Yes, I remember. How can I forget? Okay, so I think we have waited enough. I hope everyone has started their, those who have entered Unacademy for the first time for any preparation, uh, and is availing free services for this free offer for the first time. This offer, that is the free trial offer, is only valid for those people. अगर आपने पहले कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो it might not work for you, because this is only for new users. Okay. यस श्रद्धा, प्रीवियस एडिटोरियल आंसर्स हम तब तक डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा, आई थिंक लास्ट क्लास नॉट अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन देखा मैंने. what you are supposed to do is, जैसे ही I start giving you words, vocabulary words, start making words over here. Okay, so so that you know the application and you remember it, because you have made your own sentence, and that will trigger a कनेक्शन. ठीक है, आपके दिमाग में कनेक्शन बन जाएगा कि ये मैंने सेंटेंस बनाया था एंड दिस इज हाउ इट इज यूज्ड. सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग सेंटेंसेस, एंड एट द एंड ऑफ द एडिटोरियल, the section where I will be asking you certain questions. Okay, so make sure that you are paying full attention to the editorial, and answering those questions in the end. पिछले क्लास का एडिटोरियल का मुझे बहुत सारे आंसर्स नहीं आए थे, सो आई विल नॉट बी डिस्कसिंग द प्रीवियस वन. हाउएवर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि ऑथर क्या बोल रहा है, मेन आइडिया क्या है, कंक्लूजन क्या है, बिकॉज आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोज इन द एंड. ओके. Shraddha, I will compile that one and this one. I will take both the sessions and I will discuss the answers in the tomorrow session, that is 11th of March का जो हम editorial करेंगे. उसमें I will be discussing yesterday's as well as today's. Don't you worry. आपका comment
वेस्ट नहीं जाएगा. Okay, so is everyone ready? Can I get a thumbs up? Can I get a thumbs up if you are ready for it? पलक आंसर्स जो एंड में मैं एडिटोरियल के एंड में 3 सवाल करती हूँ. आई आस्क 3 questions and specifically 3 questions only. You are supposed to write down the answer in the comment section. आप अपना आंसर लिख दो उसमें, so that I know that you have answered and I will check and I will tell you the next day कि अगर कोई गड़बड़ है या थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है या परफेक्टली ऑल राइट है, आई विल लेट यू नो. सो इट विल गेट यू बेटर एट मेन आइडिया के क्वेश्चंस जितने भी होते हैं वो निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट? सो दिस विल सॉर्ट योर मेन आइडिया एंड कंक्लूजन. सो हर एडिटोरियल का मेन आइडिया और कंक्लूजन वी विल बी डिस्कसिंग. सो चलते हैं. सबसे पहले बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद दिस, you know what you are supposed to do. You're supposed to subscribe to my Telegram channel, right? So you're supposed to subscribe to my Telegram channel, where you will be getting daily updates कि मेरी क्लास कब होने वाली है, किस टॉपिक पे होने वाली है और कितने बजे से होने वाली है. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट, अगर आप ये फ्री ट्रायल ले रहे हैं या कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, इफ यू आर becoming a student, a plus student in our Unacademy, on our Unacademy platform, तो मेरा कोड यूज करना मत भूलना. आई एम श्योर यू नो इट इज वेरी सिंपल. VP10, Vaishnavi Pandey 10. Okay, so VP10. Now let's start with the vocabulary. आज बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स है. Okay, so रेमिसेंस. ओके, रेमिसेंस इज, यहां पर टी साइलेंट होता है. इन दिस केस द टी इज generally silent in इस केस में, which is a noun and it means a sum of money sent in payment or as a gift. Okay, so remittance अगर आपको मिल रहा है तो you are getting a sum of money. Let's say आपको नया मोबाइल फोन खरीदना है and your uncle or aunt gives you sends you the money for it. Okay, so this is coming as a gift, है ना? तो उसको कहते हैं remittance. Okay, and it is a noun. Next word is very, very important. That is discrepancy. And I want you to constantly start making words. Don't leave out even a single word without writing its sentence. Okay. I'm waiting for the sentences and I will be reading out all of them. Okay. So, discrepancy बहुत important word है. आपने देखा होगा. I'm sure everybody knows the meaning of discrepancy. या सुना तो होगा. Discrepancy is an illogical or surprising lack of compatibility. Okay, so illogical या compatibility किसी चीज में नहीं मिलती है. दो चीजें compatible नहीं दिखते हैं, मतलब एक जैसे नहीं दिखते हैं, right? They are not fitting well together. तो ऐसे चीजों को डिस्क्रिपेंसी आ गई है दोनों में, राइट? लेट्स से आपका जो डेटा है, आपने जो डेटा बनाया ऑफ लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी और मैंने जो लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी दिया उसमें ऊपर नीचे है. मैंने लेट्स से 20 वर्ड दिए या 30 वर्ड, दिस क्लास मोर देन 30 वर्ड्स. सो अगर मैंने 30 वर्ड्स दिए और आपने बनाया लेट्स से 15 वर्ड्स का ही वोकैबुलरी लिस्ट, तो उसमें क्या आ गया? डिस्क्रिपेंसी आ गई. हम मेरे और आपके वर्क में डिस्क्रिपेंसी आ गई. गुड आफ्टरनून त्रिरंगा कुमार, गुड आफ्टरनून. व्हाट इज योर, मेरी स्पेशल क्लास कब होगी? मेरी स्पेशल क्लास होगी, आई विल have a special class tomorrow and you will get all the information again on Telegram group, don't worry. And the special class will have questions and quizzes related to the editorial. So I hope तीनों editorial आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें, especially the words and vocabulary, so that उसमें quiz में you fetch good marks. Okay, I think discrepancy is understood. Your discrepancy is failing the growth of our research. Very nice, Shraddha. Correct. Your discrepancy in your work or the discrepancy in your work is failing
the growth of our research. Okay, absolutely correct. I got reminiscence of on, my, off, and on. Two prepositions are never used together. Okay, so I got reminiscence on my birthday by my grandparents. Very nice. Such a sweet statement. Okay. Now, moving on to intimidation. This is something that again is important and a common word. High frequency word है intimidation. बहुत देखा होगा, intimidate करना becomes the verb, right? When we use it as a verb, as an action, to intimidate करना. Now, the act of frightening someone, किसी को डराना, okay? डराना specially मतलब particularly in order to make them do what one wants. अगर मैं कुछ चाहती हूँ आपसे कुछ करवाना, एंड मैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू नाइसली मैं आपको डरा रही हूँ, अगर नहीं किया आपने ये काम तो फिर देखना, एंड यू दैट इज इंटिमिडेशन. ठीक है, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं आपको डराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरा काम आप कर दो. ठीक है, सो दैट इज इंटिमिडेशन, इंटिमिडेट करना किसी को. Scrutiny is again something that you will see very very often being used. Okay, तो scrutinize करना कहते हैं हम. Scrutiny noun हो गया. Scrutinize something is basically अगर आप किसी चीज को क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब बहुत ध्यान से उसकी बारीकियों को देख रहे हो एंड उसको एग्जामिन कर रहे हो, दैट इज स्क्रूटनाइजिंग समथिंग. ओके, सो स्क्रूटनी अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड. इट वुड बी वेरी नाइस इफ यू कैन मेक सेंटेंसेस लाइक आई सेड. आप remember how to switch, okay, from noun to verb to adjective. You should know what are the suffixes that adds or gets deleted. Okay, instill is also something that you will see very very often. Okay, instill is also something that you will see very often. Yes, dhamki is threaten. Okay, when Triranga, when you say dhamki, it is basically threatening someone. Okay, so intimidate karna would be darana. Okay, not dhamkana. Okay, darana and dhamkana, so intimidating and threatening. Okay, that would be the combination. तो इंग्लिश में आपने देखा होगा कि बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स हैं फॉर स्पेसिफिक थिंग्स. एवरी स्पेसिफिक स्मॉल लिटिल थिंग हैज अ वर्ड, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सो मच ऑफ वोकैबुलरी, है ना. ओके, senior associate intimidates the interns on their first day. Yes, that is again correct. Shraddha, क्या brilliant sentences बनाते हो. Russia and Ukraine situation is still being scrutinized. Absolutely correct, but being scrutinized. Okay, or still in scrutiny if you are using it as a noun. Okay, अब इंस्टिल करना का क्या मतलब होता है. इंस्टिल करना किसी चीज में इज सिमिलर टू इंस्टॉल करना. जैसे आप कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे कुछ इंस्टॉल करते हो या अपने फोन पे कुछ इंस्टॉल करते हो, वैसे इंसानों में अगर कोई चीज इंस्टिल की जाती है, राइट. सो it is a verb which means gradually but firmly establish an idea or an attitude in a person's mind. तो gradually और लेकिन firm idea, firm beliefs establish karna is to instill something in a person. Okay, so let's say it can be a positive thing as well, it can be a negative thing as well. तो आप positive emotion instill कर सकते हैं किसी के मन में, या आप negative emotions instill कर सकते हैं किसी के मन में, या किसी का attitude positive negative कर सकते हो. तो instill is a verb, so you can use it in that way. No problem, Triranga. You are still learning. It is okay. It is absolutely okay. अगर आपकी गलती हो रही है, silly mistakes हो रही है, आप उसको silly बोल के बस हटा मत दो. Okay, because these silly mistakes will contribute to a bigger mistake. तो make sure कि आप you are rectifying your silly mistakes. आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, आप उसको correct कर रहे हो उसी time, so that it doesn't become a bigger problem. है ना. तो जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ, वैसे वैसे make sure you are changing the statement in your head. सेंसरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है सेंसरशिप पे. इनफैक्ट सेंसरशिप इज डन इन
अगर आप फिल्म्स देखोगे, फिल्म्स भी अगर आप रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड होता है जो सेंसरशिप का ध्यान रखती है, जो सेंसर करती है कंटेंट्स दैट आर not something that they think would be acceptable, या something that would instigate a wrong feeling in someone, या something that is obscene. ठीक है, obscene का मतलब वल्गर, कोई चीज जो वल्गर भी मानी जाती है उसको भी सेंसर कर दिया जाता है. तो सेंसरशिप जब लगा देंगे, जैसे लीडरशिप, सेंसरशिप, तो इट बिकम्स अ नाउन. Absolutely. And then, what is the meaning? The suppression or prohibition of any parts of books, films, news, etc. तो इनका कोई भी एक पार्ट को अगर हटा दिया जाता है, नहीं रिलीज होने दिया जाता है, तो उसको कहते हैं सेंसरशिप. नाउ दैट इज कंसिडर्ड. क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि उनके हिसाब से या तो ये obscene है, दैट मीन्स इट इज वल्गर, पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, सो इट इज अनएक्सेप्टेबल पॉलिटिकली, और अ थ्रेट टू सिक्योरिटी. इन तीनों रीजंस के वजह से इनको सेंसर कर दिया जाता है. या तो ऑब्सीन होते हैं, या तो पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल होते हैं, या तो थ्रेट टू सिक्योरिटी होते हैं. सिक्योरिटी पे में प्रॉब्लम आ सकती है if such content is released. So these were the words. I think all the words you understood. देखो how many star marks are there. That means all these words are important. This is also a star mark which looks like a small plant, but it is okay. Okay. So discrepancy, intimidation, scrutiny, instill, censorship. Important words. Now, sinister, again, very, very common word. You might have, एक movie भी आई थी called Sinister, which was a dark and evil movie, right? भूत के बारे में पिक्चर थी. तो sinister is basically a negative connotation word. हमेशा नेगेटिव यूज होता है इसका, ये कभी पॉजिटिव यूज हो ही नहीं सकता है. ओके, लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस और हैप्पी और गुड, it cannot be used in a bad way, right? So in the same way, sinister cannot be used in a good way, right? So giving the impression that something harmful or evil is happening or will happen, something जिससे ऐसा impression आता है, और ये adjective है. Okay, so this is like a sinister quality in him, or the sinister feel in the house, or the vibe in the house, vibe. Okay, lot of people are associating with the word vibe these days, so this is a negative vibe. Okay, so giving the impression that something harmful or evil is happening or will happen. तो that ऐसा किसी चीज से अगर impression आ रहा है तो वो sinister like है, sinister है. Okay, then is seizure. Medical seizure के बारे में आपने सुना होगा, where the body ceases to function, or something like that. Okay, before we go to seizure, let me read some of the sentences. There is always a scrutiny when Team India does not play well. Very good. Correct, Abhay. There's always a scrutiny there. Because of their past crimes, everything they do now will be subject to scrutiny. Very nice. See, where is the mistake? No mistake, Triranga. Uh, Shraddha, पॉजिटिव एटीट्यूड्स कैन नॉट बी इंस्टिल्ड. अब ये पास्ट टेंस हो गया ना, तो कैन नॉट बी इंस्टिल्ड विदाउट वर्किंग ऑन सॉफ्ट स्किल्स. वाह वाह, वेरी नाइस, मार्वलस. Then we have making you feel that something bad will happen. Okay, the terrorists were intimidating to intimidate. उसके बाद कोई preposition नहीं आता है, right? So intimidating the police to fulfill his demand. The terrorist was intimidating the police to fulfill his demands. Very nice, Nancy. Just that, take care of the intimidating too. Okay. Um, there was something sinister about Mr. Scott's death. Okay, nice. Okay, there was something sinister like. Okay, that would be a more appropriate, sinister like about Mr. Scott's death. Okay.
ओके, मिसेस फिट्जगर्ड हैज have नहीं होगा, मिसेस फिट्जगर्ड इज अ वन पर्सन, राइट? तो एक पर्सन के लिए हम हैज यूज करते हैं, ही शी इट के लिए हम हैज यूज करते हैं, तो इसीलिए हैज अ सिनिस्टर लाइक पर्सनैलिटी। ओके, she seized she seized to she seized hold of my hand. Okay, the court ordered the seizure of his assets. Very nice. Absolutely correct, Palak. Shivani, I did look at your sentence. No? Okay. Now, good job. You are actually leading. So I have to hurry up क्योंकि आप सीजर पे भी पहुंच गए हैं लोग। तो यहाँ पर सीजर का मतलब क्या है? हम मेडिकल सीजर की नहीं बात कर रहे हैं, बट इट मीन्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। जो होता है बॉडी को, दैट इज द सेम थिंग दैट इज अप्लाइड टू अ कॉन्सेप्ट या टू अ पर्सन। The action of capturing someone or something using force. So this is that kind of seizure we are talking about, कि किसी को जबरदस्ती दबोच लेना। ओके, सो ऐसे कहते हैं कि उसके घर से पुलिस ने उठा लिया, सो दैट इज पुलिस ने सीज्ड हिम। ओके, इंटरसेप्ट करना मतलब अगेन इट इज अ वर्ब, सो सीजर इज अ नाउन, intercept is a verb which means obstruct। okay, intercept करना, interfere करना, it is similar to interfere, लेकिन हम interfere कहाँ करते हैं? टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू अ डेस्टिनेशन। अगर कोई कहीं जा रहा है, तो अगर आपको उनको रोकना है, बाधा डालनी है, अड़चन डालनी है, तो आप उनको इंटरसेप्ट कर रहे हो। तो जनरली क्या होता है कि आप बिना हेलमेट के जब आप स्कूटी या बाइक चलाते हो, तो पुलिस आपको क्या करती है? इंटरसेप्ट कर देती है बिफोर यू क्रॉस द सिग्नल। ठीक है, तो दैट इज इंटरसेप्ट। लेजिटिमेट इज समथिंग दैट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, और इसका मीनिंग आज ही जान लो, बिकॉज आफ्टर दिस आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द वर्ड लेजिटिमेट। लेजिटिमेट इज एनीथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी legally legally confirming। okay, so something that is legally right, something that is legally right is in the sense legally सही है कोई चीज, तो उसको legitimate कहते हैं। ठीक है, compelling is force or oblige to do something, so force or oblige someone to do something। तो मैं अगर आपको compel कर रही हूँ sentences बनाने के लिए, तो मैं आपको oblige कर रही हूँ, मैं आपको force कर रही हूँ to make sentences। okay, hi Mariam, good afternoon। Yeah, Shivani, if you can write the sentence once again, I will look at it। The heavy rainfall intercepted her path, because verb, अगर आप past की sentence बना रहे हो, तो you have to use ed, right? So intercepted her path to the forest। Very nice, Palak। Seizure is similar to abduction। Yes, they are synonymous। Yes, there must be a legitimate force for taking the private defense। Um, legitimate force for taking the private defense. I didn't understand this one, Palak. If you can rephrase this statement. That X is legitimate son of Y। Very nice। अब हम logical reasoning की तरफ बढ़ते हुए X and Y instead of writing names, but I am happy, Rohit, that instead of writing names, you have written X and Y। ठीक है, कोई नहीं, but the sentence is absolutely correct। Okay, the waiter intercepted their कॉन्वर्सेशंस हमेशा इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, कॉन्वर्सेशंस को हमेशा इंटरप्ट करना कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसी काम करते हुए, कोई अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ काम कर रही हूँ और आप आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसको इंटरफियर कहते हैं। ठीक है, एंड दिस इज इंटरसेप्ट व्हेन यू आर गोइंग समवेयर एंड समवन स्टॉप्स यू, कि नहीं जाने देंगे आपको आगे, दैट इज इंटरसेप्ट। ओके,
The claim made by accused is legitimate. Absolutely correct. Legitimate claim. Very nice. That's what we usually associate with legitimate claim. Okay. She thinks that my concerns are illegitimate. Very nice. You have made a sentence with the opposite. Sri Ranga, you are on fire. Very nice. Okay. All right. So, compelling, evidence, right? So compelling is force or oblige someone to do something. So I'm compelling you to make sentences. I'm urging you to make sentences. I'm forcing you to make sentences, if you want to take it in a negative way, but I'm actually doing a good thing. Okay. So dragnet, moving on to the next one. Dragnet is a noun. Okay, it is a noun. And dragnet क्या होता है? जनरली मछलियां पकड़ने के लिए मछुआरे बिछाते हैं एक बहुत बड़ी सी जाल, राइट? दैट इज कॉल्ड अ ड्रैगनेट. ओके, सो इफ वी आर अप्लाइंग इट कॉनोटेशन अगर देखा जाए तो मीनिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर, है ना? It is closer to that. So, a systematic search for someone or something, especially criminal or criminal activity. So, आपने जाल, पुलिस ने जाल बिछा दिया है to catch someone. Okay, so that is what the meaning is, right? A systematic search. आप बहुत ही systematically search कर रहे किसी चीज को, बहुत ही ध्यान दे के search कर रहे किसी चीज को, ताकि आपको criminal पकड़ा जाए या उनकी criminal activity पकड़ी जाए. So that is dragnet. Okay, and it is a noun. You cannot use it as a verb. Okay, so the police dragnet, the criminal was caught before escaping the police dragnet. Okay, before escaping the country by the police dragnet. Okay, so that would be the sentence. Expedition, expedite करना मतलब कोई चीज को, किसी प्रोसेस को तेज कर देना. एक्सपेडाइट इज वेरी वेरी, इट्स द वर्ब फॉर्म एक्सपेडाइट. एक्सपेडाइट कर देना मतलब किसी चीज का स्पीड अप कर देना कोई प्रोसेस को. ठीक है, ये वर्ब है. सो द हियरिंग वॉज एक्सपेडाइटेड. ओके, दैट मीन्स पहले जब होने वाला था उस पहले जिस स्पीड से हो रहा था उससे उससे और स्पीड हो गया है, राइट? सो दैट इज expedition. Okay, so promptness or speed in doing something. So because ये noun है तो promptness या speed, किस तेजी से आप काम कर रहे हो, that is what is expedition. Proprietor, very very common word. Everyone must have heard proprietor. अगर आपने नहीं सुना है तो आज सुन लो और याद कर लो कि any owner of a business is called a proprietor or a holder of a property. ठीक है, एक business या property का owner को क्या कहते हैं? Proprietor कहते हैं. Okay, एनेक्डोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फिगर्स ऑफ स्पीच जब हम करेंगे तो एनेक्डोट का बहुत ज्यादा काम आएगा. बिकॉज एनेक्डोट इज बेसिकली अ स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी. बहुत सारे टाइप के शॉर्ट स्टोरी होते हैं, तो एनेक्डोट कौन सा टाइप का शॉर्ट स्टोरी होता है? अब देखो, आपने बचपन में पंचतंत्र पढ़ा होगा, राइट? दैट इज नॉट एन एनेक्डोट. ओके, पंचतंत्र इज नॉट एन एनेक्डोट बिकॉज इट इज अ मेड अप स्टोरी, है ना? अगर आप देखोगे, लेट्स से किसी राइटर के लाइफ के बारे में बात की जा रही है या किसी इंसान के बचपन के बारे में बात की जा रही है, एक शॉर्ट इंसिडेंट्स बताया गया है, जैसे मीराबाई के बारे में शॉर्ट इंसिडेंट्स बताया गया है कि वो क्या करती थी, वो कैसे कृष्ण भगवान की बहुत ही डिवोटेड फॉलोवर थी. अगर उनका शादी के टाइम उन्होंने उनके शादी के बाद उन्होंने उनकी लाइफ कैसी रही उसके बारे में अगर एक छोटी सी स्टोरी लिखी हुई है, तो एक इंसिडेंस बताया गया है, तो उसको कहते हैं एनेक्डोट. ओके, सो अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी. ओके, सो समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग है. ठीक है, ऐसा बोरिंग सा कोई स्टोरी नहीं, वो चल रही थी फिर वो गा रही थी. Basically what I'm trying to say is it is not boring. Okay, it is something that is amusing or interesting कि वो ऐसे करते थे फिर वो ऐसे करते थे. Sorry, about a real incident or a person. So एक रियल इंसिडेंट या पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको एनेक्डोट कहते हैं. ठीक है, शॉर्ट स्टोरी, इट हैज टू बी अ शॉर्ट स्टोरी. Okay, now stoutly is an adverb. Okay, stoutly is an adverb, first adverb that we have ever discussed.
Last word, after that I will be looking at the sentences. Last word of this slide, there's plenty of more words. So stoutly is with courage and determination. Anything that is done with courage, बहुत हिम्मत और determination, दृढ़ता के साथ, if that is the word, के साथ अगर कुछ किया जाता है तो उसको कहते हैं stoutly. Okay, so his stoutly performance, or his um, अभी एक recent case हुआ था लेबनान में, I think, where the banks are refusing to give the people their money back. So there was this woman who robbed the bank, and her action was considered hero like, right? So her stoutly action brought, and she only robbed her own money, तो अपना ही पैसा वो अपने बैंक से निकाल ली, and she used a toy gun. That was an interesting story altogether. So that would be stoutly, with courage and determination. I hope this is clear. So all the meanings still here is clear. So we did discuss sinister, seizure, intercept, legitimate, compelling, dragnet, expedition, proprietor, anecdote, and stoutly. Okay. All right. So word should compel Russia to stop war. World should, the world, okay, the world should compel, यहाँ पर the missing है, but Sachin, correct, absolutely correct sentence. Abhay, he compelled me to not go outside the house. He compelled me not to go outside the house. Very nice. Correct. Mm, police is dragnetting the criminals of dacoity in the city. Dacoity in the city. Okay. Very nice, Abhay. Completely correct sentence, and he used dragnet as a verb by using it in the ing form, dragnetting the criminals. Very nice. The police has, बहुत ज्यादा चोर पुलिस हम खेल रहे हैं, but okay, कोई नहीं. The police have widened. The police has, क्योंकि understand हम have कब लगाते हैं? Third person singular number के साथ हम has लगाते हैं, right? राइट. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन से हो गए? ही शी इट के साथ. ही शी इट. एंड इफ इट इज अ नेम तो नेम एंड इट के साथ, राइट. बट हियर अंडरस्टैंड, कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम हैज ही लगाते हैं. ओके, सो कलेक्टिव नाउन एज इन उनमें कोई एस या ईएस नहीं होता है, लेकिन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन. जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, इनके लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे? हैज. ओके, बिकॉज इट इज अ, अगर आप पुलिस मैन बोल रहे हो, पुलिस मैन और पुलिस मैन, तो तब हैव लग जाएगा. पुलिस मैन हैव. ओके. आर्बिट्रेशन इज एक्सपेडिशियस प्रोसेस. वाओ, palak, mouthful. Very nice. A judge made the judgments in very expeditious manner. Wow, both are correct. um I will expedite my preparation. Okay, my uncle is well-known proprietor. Very nice. The police have widened the. ये तो मैंने पढ़ लिया था. I will have to expedite my preparation of a CUET because it is not so far. Yes, yes, you will have to expedite your preparation. Very nice. The Diary of Anne Frank. What am I supposed to do with that, Shraddha? Okay, Palak. Judge made the judgment in a, ये तो मैंने पढ़ लिया. Triranga. I think that they would stoutly resist that suggestion. Correct. Absolutely. Nice. My grandma used to tell me an anecdote every night. Amazing. Sweet and nice. Nancy. I read anecdote of Lord Krishna. Okay, it would not be called anecdote if you're talking about Lord Krishna because mythical हो जाती है. Understand the difference between क्या fact consider किया जाता है और क्या um,
something that is a myth. Okay, so yahan par when we are talking, anecdotes are of real incidences of people or person. ठीक है, तो you know that person existed, you know that there is written account of what he has done in his life, so that would not be called an anecdote. Okay, I will tell you what is that called when we are discussing figures of speech. Okay, or anyone can tell me what is that called if we are making a mythical short story. What will it come under? Hmm. Jhansi ki Rani fought the battle stoutly. Very nice, Palak. Wow. Correct sentence. To save the kids, Rama faced the robbers stoutly. Correct, Shraddha. Brilliant. Abhay, the way he plays, यहाँ पर plays हो जाएगा, he, she, it के साथ s लग जाता है verb में. Tennis, this shows how stoutly he is. Very nice. He started preparation of UPSC with not with stoutly. Okay, you have to remove the with over there. ठीक है शिवानी? He is compelling me to not talk to girls because we are the sigma. Okay, another sentence please. Okay, uh he is compelling me not to talk to girls. That's more than enough. Okay, because the reason इतना लंबा नहीं जाना है आपको, बस मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए. The Diary of Anne Frank it is not an anecdote because it is not a short story. It is a diary entry. It is a journal. Okay. Um, Shraddha, Shruti was telling an anecdote because his article, an anecdote about her mother. The anecdotal story about someone helps me to know more about the person. Very nice. We have to clear CLAT with, no, again, not with. We have to clear CLAT stoutly. That's more than enough. Bravely, stoutly, all this is the same. My mother always compels me to go in marriage that I don't like. Okay, okay, always compels me to go to a go to a wedding that I don't like. Okay, very nice, Nancy. Mythical short story, Legends of Lord Ram. Okay, yes, mythical short story would be Legends of Lord Ram. Right, correct. Uh, is it correct to write very before expeditious? देखो, when you are writing very, it इंटेंसिटी आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, बट इट इज नॉट नीडेड. अगर आप लिख रहे हो वेरी, इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. एक्सपेडिशियस काफी है. ठीक है, वेरी एक्सपेडिशियस मतलब बहुत तेजी से, तो इट इज ओके, बट इट इज समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. दैट्स ऑल. Okay. All right. Moving on to the next set of words, the last set of words जो हम करने वाले हैं, evasion, and then we will quickly go to the editorial, right? Evasion. Evasion is a noun. The action of avoiding something. Okay, when you're dodging something, जब आप किसी चीज को इग्नोर करके या अवॉइड करके जाने की कोशिश कर रहे हो, that means you are evading it. Okay, you are evading it, or evasion हो गया इसका noun form. Okay, noun is evasion and इसका verb हो गया evade. Bona fide. Okay, bona fide is again a foreign word जो बहुत ज़्यादा आता है. So remember this because it is something that is used very very often. बहुत common foreign word के list में ही आता है. Bona fide basically means something that is real, something that is genuine, something that is considered as authentic. ठीक है, is bona fide. Prosecution ये भी बहुत important. If you are studying for law, then it is a biggest word that you will keep saying now and then, but understand the meaning. Prosecution किसको कहते हैं? The institution and conducting of legal proceedings against someone. तो अगर आप एक institution जो लीगल प्रोसीडिंग्स कर रही है, ठीक है, किसी की तरफ अगेंस्ट समवन. ओके, तो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है आपके अगेंस्ट, लेट्स से,
in respect to a criminal charge, so that person is the prosecutor. Okay, so if a person is आपके अगेंस्ट कोई केस क्रिमिनल केस बना रहा है, okay, that person is called the prosecutor and the institute is called prosecution. Okay, the prosecutioner. Okay, myopic is something related to opic is always related to the eyes. Okay, remember that opicos is always related to eye. Optical, you must have heard the word optics, optical, all these are related to eye or lens. Okay, so short sighted, it basically means anything, any person who's being very short sighted कि अभी का सोच रहा है, आगे क्या होगा उसके सोच ही नहीं रहा है, अभी मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है, अभी मुझे बहुत लंबा एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, मुझे इतना इतना नहीं अपने ऊपर तकलीफ झेलना है या प्रॉब्लम झेलना है. सो दैट इज बीइंग वेरी मायोपिक बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स दैट इट विल गेट यू, राइट. आज अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कल जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, तो आप बहुत ही शॉर्ट साइटेड हो रहे हो, आप बहुत ही मायोपिक हो रहे हो. ठीक है, एडजेक्टिव, so you have to use it as a quality. It is a negative quality, obviously. Okay, bulwark is a defensive wall. Okay, bulwark is a noun, basically name hai, in any defensive wall is a bulwark. Okay, then we have semblance. Semblance, a semblance, a semblance, and semblance. Okay, so semblance and a semblance fall in the same word category, word group, same cluster. So semblance is a noun, the outward appearance or apparent form of something, especially when the reality is different. ठीक है, तो अगर कोई आउटवर्ड कुछ और दिखा रहा है, ओके, लेट्स से समवन इज showing that the person is pretty confident and can do anything or has the confidence to perform anywhere, but but the reality is the person is very scared. मुझे बहुत डर लग रहा है परफॉर्म करने में, लेकिन बाहर मैं दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. सो द semblance is confident, but the reality is that I'm under confident. Okay, so that would be semblance. So outward appearance जो होता है of anything, of a person or uh, uh, of a of a thing, especially when reality is different. अगर reality कुछ और है और दिखा कुछ और रहा है कोई, तो that is called semblance. Okay, now then we have avowed. Okay, avowed is a vow, a अलग से आया prefix vow. You know what is vow, right? So it is an adjective that has been asserted, admitted or stated publicly. Anything, कोई भी चीज जो publicly बोला गया है, स्टेटमेंट दिया गया है या एडमिट किया गया है पब्लिकली कि हाँ मैंने ये काम किया है, या कोई भी स्टेटमेंट जो पब्लिकली बोला गया है, इट इज कॉल्ड अवाउड. ओके, इट इज एन एडजेक्टिव. देन इज अनफेटर. अनफेटर इज अनरिस्ट्रेन और uninhibited. यहाँ पर un is missing, uninhibited. So anything जिसकी जिसके जिसके आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, nothing is stopping that person is that person is unfettered. ठीक है, if nothing can stop me or if nothing is being able to, लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बाधा डाल पा रहे हैं, that is being unfettered. Okay, डिस्क्रेशन. डिस्क्रेशन, योर डिस्क्रेशन इज अप्रिशिएटेड, बहुत ज्यादा बोला जाता है. डिस्क्रेशन मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग और स्पीकिंग इन सच अ वे एज टू अवॉइड कॉजिंग ऑफेंस और रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. तो ऐसा टाइप ऑफ टॉक जिसमें द ऐसा टाइप का टॉक जिसमें क्वालिटी ऑफ बिहेविंग और स्पीकिंग इन सच अ वे, ऐसे आप बिहेव करते हो, ये एक ऐसी क्वालिटी है. डिस्क्रेशन इज अ क्वालिटी. ठीक है, कैसी क्वालिटी है जिसमें आप ऐसे बात करते हो ताकि आप किसी को ऑफेंड ना करो, ताकि आप किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं बता दो.
All right. Now, next is carceral. Okay, carceral is basically something that is related to, ये one word substitution में आता है sometimes, where it basically means relating to or the nature of a prison. तो prison से related कुछ भी हो उसको carceral कहते हैं, ठीक है? So these were the words that we have today. Let's see the sentences, the wonderful and amazing sentences that you guys have made. Hmm. Okay. It is no wonder, okay, Palak, it is no wonder that he evades the question. Okay, it is no wonder that he evades the question. So you can add something like, she, Rohit always asks silly questions. No wonder Ajay always evades the questions. Very nice. Shraddha, the theory presented in the university is based on my bona fides. Okay, very good, absolutely correct. Uh, Mariam, he was later sent to jail to serve time for tax evasion. Very nice. Tax evasion. बहुत ही common terminology है tax evasion. Um, the movie was based on a bona fide story. Very nice. Correct. Fire flashed from his myopic eyes. Wow. Wow. Uh, no plus classes today. My plus batch is going on Tuesdays and Thursdays. Being myopic won't help you to achieve your desires. Very nice. Absolutely correct, Shraddha. आप तो motivational speaker हो सकते हो. He looks, okay, he looks very semblance in his drama. Um, it is a noun. So very semblance becomes adjective in that case. Okay, so noun की तरह use करना है. His semblance before the drama. Sorry, his semblance in the drama was appreciated. Okay, his semblance in the drama was appreciated. My candid personality makes वर्ब का, आई थिंक लॉट ऑफ यू आर फेसिंग द डिफिकल्टी ऑफ स्विचिंग, हाउ टू स्विच वर्ब्स. एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की क्लास होगी, उस पर बिल्कुल ध्यान देना. आई थिंक दैट इज वन प्रॉब्लम दैट एवरीवन, common problem that everyone has, that can be taken care of very easily. Don't you worry about it, okay? um the thief avowed his crime. Very nice. Absolutely brilliant. Short, crisp, and correct sentence. My candid personality makes me avowed. Okay, my candid personality makes me avowed. Um, the chief minister vowed to work for the development in the IT sector. Correct, Shraddha. It is very hard to live in a carceral state. Okay, in a carceral state, because it is an adjective. Okay. When guests are home, I feel I am in a carceral state. Okay, when guests are at home, I feel I'm in a carceral state. I totally get it, Shivani. You're not alone. Okay, now I never evasioned to take water when I go on long trip. That is envision. Okay, that is envision. यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? Evade करना की बात कर रहे हैं, ठीक है? I never evade from taking water when I go on long trips. That means I never avoid. You are a bona fide member of the team now. Very nice. Um, Ma'am, what sentence to make from bulwark? Okay, so bulwark is basically a defensive wall. So you can, US has built a bulwark uh, to stop immigrants from coming in. Okay, so that would be a sentence. ठीक है? The prosecution
process takes time, and this results in solving the case late. This results in uh, delay in solving the case. Very nice, Abhay. Correct sentence. Don't be bulwark of my brother. Okay. Don't be a bulwark uh, to my brother. Okay. So don't be that defensive wall to my brother. Okay. The firm lacks any semblance of realism. Very nice, Palak. Beautiful sentence. So these were the vocabulary words. I think lots of words that were very very important, that are very very important, and I want you to never forget these words. So आप ये कैसे करोगे अब ये आपके ऊपर है, but these words are good words. Okay, so make sure that you remember. Now you know कि एक बहुत ही अच्छी और exciting news है हमारे पास कि ये 7-day free trial चल रहा है. If you have never taken any free trials or any free subscription of Unacademy, you can definitely avail this offer. आप अगर पहले user हो तो आपके लिए offer activate हो जाएगा. Offer valid है only from 7th to 10th of March. Which code are you supposed to use for this? I am sure you know the answer. Please write down the answer. If you know the answer, it is VP10. Okay, so any subscription you're going to subscribe to, please make sure that you use my code. My code. Okay. Okay, so the batch that I'm currently uh, associated with, we will talk about that batch as well. उससे पहले MHCET के लिए जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि वी आर कमिंग अप विथ फ्री mock tests, and these mock tests are really really good, very nicely vetted, and they will give you a feel of the actual exam. So these are the faculties who are going to create the mock test, and they will be part of the mock test as the creator. Okay, so the mock test will start, the first mock test is on 11th of March from 2 p.m. Okay, so please make sure that you enroll. All right. And congratulations to our 2023 toppers. You all well deserve it. And congratulations to us for doing such a good job with with the students. We have 70 plus NLU admits this time. And these are some of our shining examples of admits in the NLUs. Okay. Now, this is the batch that I have started. Now, this is a beginner's batch for people who are aspiring for CLAT 2025. So, that means not this year, next year. Okay. So, if you are aspiring for 2025, please do join the batch. The batch has already started from the 2nd of March. So, I will be taking the English language section for this batch. ACE Legal. Okay, media raids and breaking the silence on press freedom. This is our editorial. तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे because there are a lot of things to discuss. Okay, so let's start. Please ध्यान देना शुरू करो because you have to spot the main idea. You have to make sure that आपको flow समझ में आ रहा है because I will only be asking you questions related to flow, not facts. Okay, on February 14th, 2023, the Income Tax Department carried out a survey action. Survey action किसने कैरी आउट किया? टैक्स डिपार्टमेंट में 14th फेब में. ऑन द ऑफिसर्स, किस पे कैरी किया? नाउ ऑन द ऑफिसर्स ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. तो इन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी पे एक क्या कैरी आउट कर दिया? सर्वे एक्शन कैरी आउट कर दिया इन न्यू दिल्ली एंड मुंबई. ठीक है, आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस सर्वे फॉर 3 days, 3 दिन तक चला ये सर्वे. प्रेस, उसके बाद एक प्रेस रिलीज इशू हुआ. किसने रिलीज किया? सीबीडीटी ने रिलीज किया. साइटिंग, साइटिंग का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटिंग? साइट करना का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना, राइट?
not reciting but just citing. Okay, cite karna, citing is a verb again which means to observe. What did they observe? And alleged का मतलब हमने डिस्कस किया था, alleged होता है something that is stated without proof, evasion of taxes. किस लिए इन पे रेड मारा गया, इनको सर्वे एक्शन क्यों लिया गया ये 3 दिन का, क्या बोल के कि ये टैक्स इवेड कर रहे हैं. On reminiscence, on reminiscence and discrepancies in BBC's transfer pricing mechanism. किस चीज पे, इनके ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म पे उसमें डिस्क्रिपेंसी है. ठीक है, that's why they have carried out the action survey, ऐसा बोल के. Many media organizations such as अब the author has started giving you, ये तो फैक्ट यहां तक बता दिया कि क्या हुआ इस इंसिडेंट्स के बाद. अब the author has started talking about it. ठीक है, many media organizations such as the Press Club of India have described the raids as deeply unfortunate. The editor's guide termed them as intimidation. Even those who may favor the tax survey will confess that the tax scrutiny is a natural outcome of the BBC's two-part documentary series, India, the Modi Question, which the BBC released on January 17th, 2023. So, अब यहाँ तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बहुत लंबी सी लाइन थी, बट द क्रक्स ऑफ इट इज, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ऐसे ऐसे कोट्स, अब ये कोटेशन में, दैट मींस डायरेक्ट स्पीच है जिसने बोला है. द एडिटर गाइड ने क्या इसको बोला, डीपली अनफॉर्चुनेट इस इंसिडेंट्स को, कि बीबीसी पे आप टैक्स डिपार्टमेंट जब सर्वे एक्शन कर रही है और 3 दिन तक चल रहा है, तो उसको प्रेस क्लब ने क्या बोला, डीपली अनफॉर्चुनेट. और उसके बाद फिर एडिटर्स गाइड ने क्या बोला, इसको इंटिमिडेशन बोला, कि ये डराने धमकाने की कोशिश है. और उसके बाद जो भी फेवर कर रहे हैं टैक्स सर्वे को, वो भी कन्फेस कर रहे हैं कि ये जो टैक्स स्क्रूटनी है, ये उसी चीज का, ये जो टैक्स के ऊपर ये जो स्क्रूटनाइज किया जा रहा है इन्हें, ये किस चीज का रिजल्ट है, ये किस चीज का आउटकम है, कि बीबीसी ने एक 2-part डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, which the name of the documentary was India, the Modi Question, which the BBC released on January 17th, 2023. ओके, दिस नाउ द ऑथर इज हिंटेड एट द टॉपिक. ठीक है, अब आपको बता दिया है कि ये हुआ, उसको बोला क्या जा रहा है कि क्यों हो रहा है, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है कि क्यों हो रहा है, और बोला क्या जा रहा है क्यों हो रहा है. एंड नाउ द ऑथर इज going to expand it in details. In an emergency secret order issued by the Ministry of Electronics and Information Technology, the documentary's web link were blocked. अब ये एक इमरजेंसी सीक्रेट ऑर्डर इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जिसमें द डॉक्यूमेंट्रीज वेब लिंक वर ब्लॉक्ड ऑन January 20th, 2023. देखो, अब ऑथर अपना पॉइंट डायरेक्टली नहीं रख रहा है. ही इज नॉट जस्ट सेइंग कि मेरे हिसाब से इसी वजह से हो रहा है. ही इज सेइंग कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इसी वजह से हो रहा है. ठीक है, सो कभी एक ऑथर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के छोड़ नहीं देता है. ही गिव्स एविडेंस एंड दीज आर ऑल द एविडेंस कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं. ओके, और अब यहाँ पर देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने भी क्या किया था, ब्लॉक कर दिया था डॉक्यूमेंट्रीज वेब लिंक को 20th January को. The timing and nature of the evidence of the events point to something being rotten in the state of Denmark. तो अब ये ऑथर बोल रहा है कि इसका जो पूरा टाइमिंग था इस पूरे इशू का, कि ब्लॉक कर दिया उनका सीरीज उसी टाइम, और उनके ऊपर रेड कर दिया गया, उनके ऊपर सर्वे एक्शन कर दिया गया, right when the documentary was supposed to be released. That is something that is showing that there is something rotten, कुछ तो सड़ा हुआ है इस पूरे इशू में. Something is fishy, basically a way of saying. Okay, rotten, सड़ा हुआ is basically something that is corrupt, something that is not supposed to be impartial, है ना. Discrepancy मैंने बताया था मीनिंग, श्रद्धा. Discrepancy is दो चीजों के बीच में, if there is no consistency between two things. ठीक है, chilling message at the root of these survey actions is an attempt to instill fear and self-censorship that begins with knocking on the doors of the offices of journalists. तो अब the author is making a statement कि ये जो
एट द रूट यहां से है। एट द रूट अगर हम इसको जड़ से इस प्रॉब्लम को देखा जाए, ये सर्वे एक्शन को अगर हम जड़ से देखें, तो ये क्या चीज करने की कोशिश की गई है, डराने की कोशिश की गई है और सेल्फ सेंसरशिप की हम खुद ही से ये अम, ये प्रोग्राम या ये सीरीज रिलीज नहीं करें, हम खुद ही बंद कर दें क्योंकि हमारे ऊपर रेड पड़ गई है तो हम ये बंद कर देंगे। ऐसा करने की कोशिश की गई है बाय द ऑफिसेस ऑफ, ऐसा चीज ऐसी चीजें हो रही हैं दैट इज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ऑफिसेज ऑफ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हो रहा है, उनके दरवाजे पे ऐसी उनके दरवाजे पे नॉकिंग ऑन द डोर्स इज बेसिकली अ प्रॉब्लम कमिंग at them, okay, towards them. Today, these actions have become sinister as they now involve the seizure of devices. अब ये जो एक्शंस है, अब आज देखा जाए तो ये एक्शंस बहुत ही इविल एक्शंस हो गई हैं, बहुत ही बुरे एक्शंस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या इन्वॉल्व हो जा रहा है, सीजर ऑफ डिवाइसेस, मतलब उनके डिवाइसेस को भी रख लिया जा रहा है, जब्त कर लिया जा रहा है, राइट? हेंस इज अ कंक्लूजन, an unpleasant surprise turns into severe shock when journalists, as in the case of the BBC, are treated as potential criminals. तो इसके वजह से एक बहुत ही सिवियर शॉक होता है उनको कि हमें हमें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, स्पेशली इन द केस ऑफ बीबीसी। दे विल लुक एट द इशू कि हमें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, राइट? द सीबीडीटी प्रेस रिलीज गिव्स अस clues when it states that the crucial evidences by way of statement of employees, digital evidences and documents were gathered. तो ये सीबीडीटी प्रेस रिलीज में हमें ऐसा क्लूज मिला, ये हिंट्स मिले हमें कि यही हिंट्स मिले इससे कि दे आर बीइंग ट्रीटेड एज पोटेंशियल क्रिमिनल्स। क्यों? कैसे हिंट्स? व्हेन द जब वो उन्होंने क्या बोला कि क्रूशियल एविडेंसेस बाय वे ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, डिजिटल एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, अगर उन्होंने ये कोट किया, वर गैदर्ड, ये सारी चीजें गैदर की गई थी, तो दैट गिव्स अस अ क्लू कि यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ है, राइट? दे आर बीइंग ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स, क्योंकि क्रिमिनल्स के साथ ऐसा किया जाता है। There are more pointers, such as the one provided by the BBC, which said that on February 19, 2023, journalists' computers were searched, their phones were intercepted, and information was sought from them about their working methods. तो हमें और पॉइंटर्स मिला जब बीबीसी ने बताया कि 19 फरवरी को उनको जर्नलिस्ट कंप्यूटर्स वर्सेस सारे के सारे जितने जर्नलिस्ट थे उनके कंप्यूटर्स को सर्च किया गया, उनके फोन्स को इंटरसेप्ट किया गया और उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई उनके वर्किंग मेथड्स के बारे में। Even again, it is in double inverted commas, okay? So that means it is being said by someone, right? Even if the case of the CBDT is perceived as legitimate, अगर इस केस को हम legitimate भी माने, ठीक है, कि maybe they are working within the confines of the law, अगर हम इसको ऐसा मान भी ले, it would at its very best be limited to an accounting and financial investigation. तो अगर हम ऐसा मान भी ले तो इसको बस लिमिट कहाँ तक करना चाहिए था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तक ही लिमिट करना चाहिए था, without any clear and compelling reasons to extend a digital dragnet on working journalists. This is what can be defined as a fishing expedition. तो यहाँ पर fishing and dragnet देखो, authors are very artistic in these ways, so it is giving you a picture of catching a fish, right? So यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोई भी क्लियर और कंपेलिंग एविडेंस के ऐसे मतलब लेजिटिमेट एविडेंस के बिना डिजिटल ड्रैगनेट ऑन जर्नलिस्ट, मतलब डिजिटल उनका एक्सेस, उनके ऊपर डिजिटल ड्रैगनेट बिछाया जा रहा है, मतलब उनके सारे डिवाइसेस को ले लिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ले लिया जा रहा है, तो उस तरह का जाल बिछाया जा रहा है उनपे, ठीक है? दिस इज व्हाट कैन बी डिफाइंड एज फिशिंग एक्सपेडिशन। इसको हम इन्वेस्टिगेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको एक ऐसा एक्सपेडिशन बोलेंगे। एक्सपेडिशन क्या होता है? जब आप कोई एडवेंचर पे जाते हो, आप कोई जर्नी पे जाते हो, दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेडिशन, ठीक है?
तो इसको हम एक फिशिंग एक्सपेडिशन ही कहेंगे कि आप मछली पकड़ने जा रहे हो और आपने जाल बिछा दिया है, ये उसी तरह का लग रहा है सिनेरियो. It becomes important here to consider the wider trend of the extraction of sensitive data from journalists by using the tax and police departments across India. तो ये टैक्स और पुलिस डिपार्टमेंट अक्रॉस इंडिया में ऐसा हो रहा है कि टैक्स और पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से जर्नलिस्ट को उनकी सेंसिटिव डेटा को ली जा रही है, उनकी सेंसिटिव डेटा को ली जा रही है. मूविंग ऑन टू द, यहां तक इट इज क्लियर, एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड. बहुत सारे वर्ड्स जो मैंने डिस्कस किए थे, सारे के सारे वर्ड्स यहां पर हैं. Scrutiny, inspect, yes, close. Okay, all right. So let's move on to the next paragraph. Since 2018, there have been at least 10 reported instances of device searches that impact press freedom. So 2018 से अब the author is giving you evidence from earlier. ठीक है, पहले से ये हो रहा है, 2018 से हो रहा है. अब देखो ईयर मेंशन्ड है इसलिए हम सिंस यूज कर रहे हैं. ठीक है, 10 रिपोर्टेड इंस्टेंसेस, ऐसे 10 इंसिडेंसेस हो गए हैं. बिगिनिंग विद द क्विंट, they have gone on to include the proprietors and senior editors of publications such as Alt News, Bharat Samachar, Dainik Bhaskar, News Click, The Wire, the Independent and Public Spirited Media Foundation, and journalists such as Fahad Shah, Rupesh Kumar Singh, Siddiqui Kapan. ऑल दीज, ये पूरा यहां से यहां तक इट इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बस आपको इन द ऑथर इज गिविंग यू प्रूफ कि ऐसा पहले भी हुआ है और इन सब के केसेस में हुआ है. ठीक है, जहां पर बड़े लेवल तक इवन द प्रोप्राइटर्स, ओनर्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज चैनल और सीनियर एडिटर्स को भी पकड़ लिया है इन्होंने इस केस में, ऐसे करके. दिस एनेक्डोटल लिस्ट प्रेजेंट्स, तो एनेक्डोटल लिस्ट मतलब रियल लिस्ट, राइट, रियल शॉर्ट लिस्ट. Okay, the author is calling it anecdotal list because it is a real list. Okay, presented an incomplete data set as the union government has stoutly defended its inability to keep count. तो यूनियन गवर्नमेंट ने भी मान लिया कि ये पहले तो ये डेटा जो इनका प्रोड्यूस किया गया था वो इनकम्प्लीट डेटा था, और दूसरा यूनियन मिनिस्टर ने भी ब्रेवली इस चीज को कह दिया है कि हम इसको नहीं काउंट कर सकते हैं. वी कैन नॉट कीप काउंट ऑफ दीज डेटाज. ओके, half truth in the executive response in half truth in the executive response in a parliamentary response dated August 10th 2022, the Minister of Home Affairs has stated that since police and law and order are topics within the competence of state government, it cannot सेंट्रली मेंटेन डिवाइस सीजर ऑफ जर्नलिस्ट. तो अब क्या बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या कह रहे हैं कि ये पुलिस और लॉ और ऑर्डर ये हमारे ये सेंट्रली नहीं मेंटेन होते हैं, कोई हम सेंट्रली नहीं इसको ऑपरेट करते, ये तो स्टेट्स के होते हैं, तो हमारा ज्यादा हिस्सा नहीं होता है इसमें, वी कैन नॉट डू दिस. तो ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से इट इज ऑल जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन दैट इज गोइंग ऑन, है ना. अब this is half truth, the author is calling it half truth. Okay, this is the author's opinion. और किस वजह से, दो रीजन की वजह से, और दो रीजन क्या है. The first is the crime in India report queries data from the state government and can easily be extended to include data on device seizure of journalists. तो ये क्या बोल रहा है ऑथर, क्या बोल रहा है, ये तो पहले आधा सच है. क्यों आधा सच है? पहला रीजन कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट क्वेरीज, जितने भी रिपोर्ट क्वेरीज के डेटा हैं फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ये इजीली एक्सटेंड हो सकते हैं, जिसमें इंक्लूड किया जा सकता है जर्नलिस्ट का डेटा, एक्सटेंड किए जा सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, राइट. तो एक ये रीजन है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट और सेंटर का इसमें
they cannot be associated together in doing this. It can be possible. क्यों नहीं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो easily extend कर सकते हैं अपना data, and इसमें journalists भी आ सकते हैं. Second, दूसरा reason क्या दिया है the author? Many of the searches and seizures have been performed by central agencies. आधे से ज्यादा searches और seizures जितने भी किए गए हैं वो central agencies ही की है, such as the income tax department. एग्जाम्पल दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया है, एंड सच अ रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन्ड एंड पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब पब्लिश कर सकता है, टैक्स डिपार्टमेंट जब इस पे काम कर सकता है, तो इट इज सेंट्रल ही हुआ ना इन दैट केस, राइट? मोस्ट ऑफ दीज केसेस आर connected to this central authority. Such institutional evasion only increases suspicion about the bona fides of prosecution and also represents a lack of intent for any studied consideration by the executive, particularly the union government. Executive body कौन सी है? हमारी गवर्नमेंट है, राइट? तो ये क्या कह रहा है ऑथर, क्या कह रहा है? ये जितना भी इवेजन्स का एग्जाम्पल दिया गया, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा सस्पिशन ही बढ़ा रहा है, ये हमें सोचने को मजबूर कर रहा है कि कितने सारे केसेस एक्चुअली जेन्युइन है, राइट? और इसमें कितने केसेस में कोई represents a lack of intent for any studied consideration by the executive. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है ऐसे स्टडीज में, ओके? पर्टिकुलरली द यूनियन गवर्नमेंट, ऐसा नहीं हो सकता, ओके? इट ऑल्सो अनअर्थ करना मतलब कोई चीज को ऊपर लाना, कोई इश्यू को ऊपर लाना, कोई प्रॉब्लम को ऊपर लाना, कोई फैक्ट को ऊपर लाना. अ मायोपिक येट वाइडली हेल्ड बिलीव दैट protection of freedom of speech, especially its most critical voices in is a democratic duty limited to the courts. तो इससे और एक शॉर्ट साइटेड व्यू पता चलता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पेशली जो ऐसे वॉइसेस जो जरूरी वॉइसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट वॉइसेस हैं, वो किसकी होनी चाहिए? वो कोर्ट की ड्यूटी है, वो कोर्ट तक ही सीमित है, वो और किसी तक नहीं जाती है. तो दैट इज अ वेरी शॉर्ट साइटेड व्यू, द ऑथर सेज. एंड फाइनली वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज. बिफोर वी मूव ऑन, is it clear till here? That entire paragraph is clear? So basically उसमें कुछ नहीं है, the author is just giving you reasons as to why he's saying that it is fishy, okay? And he's giving you evidences from all across. Yeah, there's just one last paragraph, don't you worry. It is a long editorial, so just getting done with it, okay? All right, here the popular view of trial courts as a bulwark against threats to our constitutional rights is rhetorical to legal academics and trial courts practitioners who honestly assess their roles. तो पॉपुलर व्यू क्या होता है कि ट्रायल कोर्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक डिफेंसिव वॉल का काम करते हैं. किस चीज से? थ्रेट्स जितने भी आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, वो डिफेंड करते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को. इज अ रिटोरिकल टू लीगल एकेडमिक्स. ये ऐसी चीज है जो रिटोरिकल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज यूज टू परसुएड इन अ स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है? तो रिटोरिकल यहाँ पर मतलब लीगल के से रिलेटेड ही. एकेडमिक्स एंड ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिशनर्स हु ऑनेस्टली असेस देयर रोल्स. तो ऐसे ये राइट्स जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उन्हीं तक सीमित है. Their underlying institutional culture are what lawyer Abhinav Sekhri terms as rooted in avowed colonial mentality of maximizing state interest while depriving any semblance of protection to the accused person. तो ये एक क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे स्टेट का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और जो अक्यूज्ड है उसके लिए कुछ हेल्प नहीं की जा रही है. ये अभिनव सेखरी का ओपिनियन है, एंड द ऑथर इज quoting it. That means the author is trying to show you that this is what is happening, है ना? ऐसा ऐसा लोग सोच रहे हैं. दिस एनालिसिस हैज बीन डेल्ट विथ इन अ
paper that specifically looks at power to unlock smartphones, drawing from the Code of Criminal Procedure 1973, the procedural law to govern criminal cases in India. तो criminal cases in India को govern करने के लिए ये उसी analysis का part है. Not important. It indicates that specific, अब ये क्या indicate करता है is important, कि that specific legal provision provide for unfettered discretion to police officers apart from a carceral spirit that resides within our criminal justice system, deeply ingrained practice for decades. तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो specific बहुत सारे big words यहाँ पर use किए गए हैं, लेकिन बेसिकली इट मीन्स कि ये जो पूरा ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये क्या इंडिकेट करता है 1973 का, कि जितने भी स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस हैं फॉर अनफेटर्ड डिस्क्रेशन टू पुलिस ऑफिसर्स, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स के लिए डिस्क्रेशन उनको दिया गया है, वो कार्सरल स्पिरिट दैट फ्रॉम कार्सरल की उनको जेल ना हो या किसी को जेल ना हो जाए, रिसाइड्स विद इन आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. और ये किसके अंदर में आता है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर में आता है. डीपली इनग्रेन्ड एंड प्रैक्टिस फॉर डिकेड्स. और ये डीपली इनग्रेन्ड एंड प्रैक्टिस फॉर डिकेड्स, दैट्स बेसिकली ट्राइंग टू से कि ये सब तो क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर्स हैं जो इनके ऊपर की जा रही है, राइट? This results in outcome where criminal courts rarely check the police for their in okay, so basically ये सारे rights किसके अंदर में आता है? पुलिस के अंदर के, कि अगर आपको लगता है कि कोई क्रिमिनल केस हो रहा है, कोई क्रिमिनल इशू है, तो आप ये सारे एक्शंस ले सकते हो. आप उनके स्मार्टफोन्स अनलॉक कर सकते हो, आप उनका कोई भी डिवाइसेस ले सकते हो. ये पावर दे दी गई है पुलिस को, ठीक है? अब इसके वजह से the author is saying the results in outcomes where criminal courts rarely check the police for their investigatory practices and evidence collection. और इसमें पुलिस को कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि पुलिस से पूछा जाता है कि आपने कैसे ये प्रोक्योर किया ये एविडेंस, कैसे आपने कलेक्ट किया ये एविडेंस, कहाँ से कलेक्ट किया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बहुत कम चलती है. It is here that one may find an answer to the question legality of the CBDT survey as pointed out by the tax experts such as दीपक जोशी. अब यहीं पर इनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सर्वे एक्शन जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं. विदाउट एनी फियर ऑफ सैंक्शन or check on their power, investigating officers in a survey action will freely conduct a more invasive search and seizure. उनको अगर चेक नहीं किया जाए कि वो क्यों सर्टेन डेटा ले रहे हैं, सर्टेन डिवाइसेस ले रहे हैं, क्यों अनलॉक कर रहे हैं, अगर उन पे चेक ना डाला जाए, उन पे सैंक्शंस नहीं डाले जाए, उन पे सर्टेन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाला जाए, तो ये क्या करेंगे? ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, ये सर्वे एक्शन बोल के फ्रीली जो मन किया वो उठा लेंगे, जो मन किया वो सर्च कर लेंगे, जो सीज करने का मन किया वो सीज कर लेंगे. ओब्लिवियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ओब्लिवियस मतलब होता है when you're not aware of something. For example, let's say मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, राइट? एंड I'm not aware of it, ठीक है? और मैं बात कर रही हूँ और मेरे चेहरे पे लगा हुआ है, let's say there's a black mark on my face because of some residue, ठीक है? या पेन का मार्क लगा हुआ है एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, सो आई एम ओब्लिवियस टू द मार्क ऑन माई फेस. ओके, दैट मीन्स मुझे नहीं पता था कि मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल आर ओब्लिवियस टू द थिंग्स दैट आर कॉट बिटवीन देयर टीथ. ओके, सो दांतों के बीच में जो खाना रेसिड्यू रह जाता है, खाने का रेसिड्यू रह जाता है, उसके बारे में बहुत लोग अनअवेयर रहते हैं, ओब्लिवियस रहते हैं. टू द लिमिटेशन एंड स्पिरिट ऑफ द टेक्स्ट इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961. बहुत लोगों को नहीं पता है क्या लिमिटेशन है, उसका स्पिरिट क्या है, इनकम टैक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, और इसी वजह से अब्यूजेस will only increase given the perceptible political interest and the impossibility for any real sanction. तो ये केसेस बस बढ़ेंगी और अब्यूजेस इसके ज्यादा होंगे क्योंकि पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट देखा जाता है इनमें और इन पे सैंक्शंस तो लगाए नहीं जाते हैं. सो दिस वाज द इंटायर editorial. We took a lot of time today, but I hope it is clear to everyone. I hope everyone got what the editorial has to say. Yes?
I will not be, the same thing is being repeated in the last paragraph. So we will skip the last paragraph. Now, these are the questions that I want to ask you. What is the author's main concern in this passage? मैंने पूरा passage समझा दिया आपको, पूरा article editorial समझा दिया आपको. Now you are supposed to tell me what is the author's main concern. Second question is, what was the conclusion of the passage? ठीक है. And third question is, make sentence with the following expressions. You are supposed to just make 3 more sentences. One with oblivious because it was not asked. Second is with cluster. Cluster is a group of things. Cluster of stars कहते हैं हम generally. And sanction. Sanction is, you must have heard, रशिया यूक्रेन के केस में बहुत सारे sanctions लगाए गए थे रशिया पे. Yes, please make sure that you write it in the comment section, and tomorrow we are going to discuss all of it. If you have written, all the 3 questions will be discussed on the basis of आपने क्या answer किया है. So I will project it in the class, and you will be able to see it, and I will tell you if it is right or not. Okay, so go ahead and make sure that you read this editorial on your own as well, and see कि आपको कहीं अगर आपको समझ में आ गया या नहीं आया. If you have any doubts related to it, the editorial, please do ask me in the next class. I will see you again tomorrow. Thank you so much for being present throughout the session. It was a long session, and I will make sure that it is a little shorter the next time. All right. Thank you guys. Have a good day. Bye bye. You are welcome, Shraddha.